Namaste बच्चों. Today we are going to see the Hindi revision video for your second language, that is sixth video and that video's revision. Okay. So you have seen your sixth video, that is noun. Okay. So today we are going to see that sixth revision video only. Okay. So already I told you what is Sanya. So children, before going inside the class, I want you to tell you the important thing that coronavirus is spreading more. So please be careful, stay in your home. If you want to go out, please wear mask and use hand sanitizer, and then maintain social distancing. Okay. And then one more thing, you have to eat foods which are having more immunity power. So you can ask, gee, why we should you eat that types of food? So when you are eating that types of food, what will happen? Your body will get the immunity power and it will not allow any virus to get inside your body. So that when the virus is not entering into your body, you will be very safe and you will be healthy. Okay. And then one more thing, so children, please avoid group farming and avoid eating junk foods. Okay. So because this will always make you to be in a trouble condition. So please be safe. So follow my advice and then do what I told. So today we are going to see the revision video for your sixth video. Sanya. So Sanya, already you know that is a name, place, things or person. So now Sanya. A noun is the name of an individual, place, thing, idea or a sense. Simply nouns are naming words. So nouns are nothing but that are naming words. What is noun? Nouns are nothing but that means naming words. संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है. सो व्हाट इज संज्ञा? संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष स्थान, वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है. सो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. द प्लेस, दैट इज ताज महल, and then here you can see a person, that is Amit, and then here you can see a things or a book called Ramayana, and then here you can see the things, that oil. So one more time I will explain you. A noun is the name of an individual, place, things, idea or a sense. Simply nouns are naming words. So as I told you, noun are the naming words. संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है. सो व्हाट इज संज्ञा? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस शब्द को कहते हैं. सो दैट वर्ड वी विल बी टेलिंग एज नाउन, in which they are telling about a particular vastu, that means things, sthan, that means place, vyakti, that means person. So if they are telling about a place, things or a person, that is only noun. उसको हम संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देख रहे हैं कि we are having the examples like ताजमहल, Amit, Ramayana and then oil. So these are the examples for sanya. Again, now noun is nothing but किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है. So in noun, if they are telling about any person, place, things or any sense, that is only sanya. So here you can see the example. Pustak, that means book. Mej, that means table.
and then Vyakti. Vyakti means person. Gadi, that means car, that means any type of vehicle. So before I told you that Sanya is nothing but in which they are telling about a particular place, things or a person, that is only noun. Again I am repeating one more time, listen carefully. किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है. So in संज्ञा, if they are explaining about a person, a place, things or any type of sense, that is only sanya. So here you can see the example pustak, mage, vyakti and then gadi. Now noun की परिभाषा. So now we are going to see the definition of संज्ञा. परिभाषा वह शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव एवं विचार का बोध कराता है संज्ञा कहलाता है. So noun denotes the name of a person, animal, place, things, state, feelings or an idea. In a simple words, noun is a naming word. So already I told you what is noun, what are the things we will be telling as noun. Okay, so again I will repeat. परिभाषा वह शब्द जो किसी प्राणी, what is प्राणी? Any person, वस्तु, things, स्थान, place, गुण, character, भाव is also character, एवं विचार, that is idea, का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाते हैं. So these we will be telling as संज्ञा. Definition of noun. A noun denotes the name of a person, animal, place, things, states, feeling or an idea. In simple words, noun is a naming word. So next one, example, राम जो एक प्राणी व्यक्ति का नाम है. So first I told you that प्राणी, that means a person. So here in this example you can see राम जो एक प्राणी व्यक्ति का नाम है. So this is a name of a person. Next कबूतर जो एक प्राणी पक्षी का नाम है. So प्राणी means they will be considering as all the living things. Either it can be a person or a bird or an animal. Okay. So next example is कबूतर जो एक प्राणी पक्षी का नाम है. So this is the name of a bird. कबूतर means pigeon. So first I have told you that Ram, it is a name of a person. Second one कबूतर, it is a name of a bird. Next one computer जो एक वस्तु का नाम है. What is वस्तु? I told you that is things. Okay. Now computer जो एक वस्तु का नाम है. So computer is a thing. Next ईमानदारी जो एक गुण है. So ईमानदारी is a character, that is nature of that person. Next we are going to see a kinds of noun. संज्ञा के भेद. So we are having 5 types. So first one proper noun, व्यक्तिवाचक संज्ञा. Second one common noun, जातिवाचक संज्ञा. Next one collective noun, that is समूहवाचक संज्ञा. Fourth one material noun, that is द्रव्यवाचक संज्ञा. Fifth one abstract noun, that is भाववाचक संज्ञा. One more time I will repeat. Proper noun व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, abstract noun भाववाचक संज्ञा. So again one more time I will repeat. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा and then भाववाचक संज्ञा. So first we have seen what is संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद. Now I hope you have understood the
What are the different types of noun? We are having 5 types of noun we can see here. Again types of noun. संज्ञा के प्रकार. संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं. So we are having 5 types of noun. That is first one proper noun. व्यक्तिवाचक संज्ञा. किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. So if they are telling about a particular place, persons or things, that is only व्यक्तिवाचक संज्ञा. So in व्यक्तिवाचक संज्ञा you can see the word विशेष. विशेष means particular. Example जैसे राम, नई दिल्ली, कोलकाता, नरेंद्र मोदी, रामायण, होली आदि. So these are the examples of proper noun. Ram means name of a person. Nai Delhi, name of a place. Kolkata, name of a place. Narendra Modi, name of a person. Ramayan, name of a book. Holi, name of a festival. So the next one is common noun. जातिवाचक संज्ञा. वैसा संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न होकर पूरे जाति या पूरे श्रेणी का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. सो इफ दे आर टेलिंग पर्टिकुलरली अबाउट एनी जाति, दैट मीन्स एनी कैटेगरी, दैट इज ओनली कॉमन नाउन. जातिवाचक संज्ञा. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल, अस्पताल, हॉस्पिटल, लड़का, बॉय, शहर, टाउन, कुर्सी, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, थिंग्स, मोबाइल, and then etc. So in this they are telling particularly about that category, that is only जातिवाचक संज्ञा, that means common noun. Next one is collective noun. समूहवाचक संज्ञा. वैसी संज्ञा जिससे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. सो इफ दे आर टेलिंग एनीथिंग इन अ कलेक्टिव मैनर, दैट इज ओनली समूहवाचक संज्ञा. फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास, दैट मीन्स कक्षा, भीड़, क्राउड, गुच्छा, बंच, समिति, दल, टीम, झुंड, that means flock. So these they are telling as in a collective manner. So only this is समूहवाचक संज्ञा. And then the next one is material noun, that is द्रव्यवाचक संज्ञा. जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, उसे हम गिन नहीं सकते, सिर्फ तोल या माप सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. सो द्रव्यवाचक संज्ञा इज नथिंग बट अ मटेरियल और अ सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल तेल, दैट इज ऑयल, पेट्रोल, पानी, वाटर, सोना, गोल्ड, चांदी, दैट इज चांदी मीन्स यू ऑल नो दैट सिल्वर, कागज, पेपर, एंड देन आटा, wheat, दाल, गेहूँ. So these are the material noun, that is द्रव्यवाचक संज्ञा. So next one is abstract noun, भाववाचक संज्ञा. जैसे संज्ञा जिस संज्ञा से हम लोग ना छू सकते हैं या ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. So this noun is nothing but we are not able to smell or we are not able to see, just we can realize that is only abstract noun, भाववाचक संज्ञा. So जिस संज्ञा से हम लोग छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. So महसूस means sense, महसूस means we can realize. So whatever thing we can realize with ourselves, that is only भाववाचक संज्ञा. So we can feel, we cannot see, we cannot touch, just we can feel, that is only भाववाचक संज्ञा. So children, you have seen types of noun.
संज्ञा के प्रकार, and I have explained you the each and every संज्ञा in a brief way. That is proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. If they are telling about a particular a person or a place or a thing, that is proper noun. If they are telling about any category, that is common noun. If they are telling in a collective manner, that is collective noun. If they are telling about a material, material noun. They are, if we are not able to see anything, if we are not able to touch anything, just we can feel, that is only भाववाचक संज्ञा, that is abstract noun. Okay, so till this we have seen the types of noun and about that briefly. Next, in the types of noun, first we are going to see व्यक्तिवाचक संज्ञा, that is proper noun. So व्यक्तिवाचक संज्ञा द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. So already I told you, they are telling about a particular person, particular place, particular things or particular name of the place, that is only व्यक्तिवाचक संज्ञा. For example, महेंद्र सिंह धोनी एक विशेष व्यक्ति है. So महेंद्र सिंह धोनी, he is a special person, that is particular person, he is a cricket player. बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु विशेष प्राणी है. So बाघ, that means tiger, it is our national animal. So this is also a particular animal for our country. So that is only a important person or a place or a things. Okay, so here already I told you in one example. First I told you that Ram, did you listen that? Ram, so it is a particular person. So like that here Mahendra Singh Dhoni is a particular person. Tiger, this is also particular animal. And then Bhagavad Gita Vishesh Granth hai. So Bhagavad Gita, it is an important book. So Gita, this is our Hindus important book. So that is also a particular book. Next, Lal Killa. Lal Killa is an important place. It is an important place in Delhi. So this is also a particular place. So व्यक्तिवाचक संज्ञा द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. So again I will repeat, again I will tell you that व्यक्तिवाचक संज्ञा is nothing but if they are telling about a particular place, particular thing, particular person or a particular name of that place, that is only व्यक्तिवाचक संज्ञा. So here Mahendra Singh Dhoni, he is a cricket player. So he is a particular person. बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है. So tiger is our national animal. So this is also a particular animal. Bhagavad Gita विशेष ग्रंथ है. So Bhagavad Gita is our important book for Hindus. लाल किला एक विशेष स्थान है. So लाल किला, that means Red Fort. It is an important place in Delhi. So this is only व्यक्तिवाचक संज्ञा you can see here. Again some examples for व्यक्तिवाचक संज्ञा, that is proper noun. जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. So if already I told you that if they are telling about a particular single person or a place or a things, that is also व्यक्तिवाचक संज्ञा. So first one, व्यक्ति, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर आदि. So these are the name of the persons, that is Bhagat Singh, Mahatma Gandhi, Sachin Tendulkar. And then sthan, that means place, Delhi, Goa, Mumbai, Jaipur, Shimla, Adi. So these are the name of the place. Next one, Imarat ka naam, name of the building, that is Taj Mahal, Lal Killa, and then Adi. So these are the places of building.
व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण. So examples for व्यक्तिवाचक संज्ञा, that is ताजमहल 7 अजूबों में से एक है. So ताजमहल is a wonders of our country. So sorry children, in first we are having one sentence that I will explain you. Ram school जाता है. So Ram is going to school. ताजमहल 7 अजूबों में से एक है. So ताजमहल is the wonders of our India. जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं. So जवाहरलाल नेहरू is the first prime minister of our India. शिमला एक क्वारंटाइन स्थल है. So शिमला is a tourist place. So these are the examples of व्यक्तिवाचक संज्ञा. One more time I will tell you the examples. First one, राम स्कूल जाता है. ताजमहल 7 अजूबों में से एक है. जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं थे. शिमला एक क्वारंटाइन स्थल है. So शिमला is an important tourist place. So now we have learned what is व्यक्तिवाचक संज्ञा. Next is जातिवाचक संज्ञा, that is common noun. So common noun is nothing but, you can see this picture, pakshi, that means bird, पेड़, that is tree, कुत्ता, dog, लड़का, boy, लड़की, girl. So जातिवाचक संज्ञा is nothing but पक्षी, पेड़, कुत्ता, लड़का and then लड़की. जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है. सो जातिवाचक संज्ञा इज नथिंग बट इफ दे आर टेलिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन or a same kind of place, things or any particular person, that is only जातिवाचक संज्ञा. जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, so if they are telling about a same kind of प्राणियों means that is persons, वस्तुओं, place तथा स्थान, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है. So again one more time I will repeat, if they are telling about a same kind of person, place or things, that is only जातिवाचक संज्ञा. For example, car and then nagar, that is city. So car and city, they are the same kind of जातिवाचक संज्ञा. So here they have given examples for जातिवाचक संज्ञा, that is car and then nagar. So they are telling about a same kind of a particular place and things. So that only we are telling as जातिवाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा is nothing but जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. If they are telling about a character of some place, things or a person, that is only भाववाचक संज्ञा. For example, जैसे बचपन, रसीला, दया, वीरता and then आदि. So बचपन means childhood, रसीला means tasty, दया that means very poor or that means very serving character, and then veerta means that is strong or brave. So here they are telling about a character of a person, place or a things, that is only you can see the examples here. So in that circle between भाववाचक संज्ञा is there. So first one is bachpan, that is childhood, and then rasila, so mango is a juicy fruit that it can give a good taste, and then daya, so that is serving manner, and then veerta, that is brave. So these are the examples of भाववाचक संज्ञा. One more time I will read the definition. जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बचपन, रसीला, दया,
Virta, Adi. Here you can see some examples of Bhavvachak Sanya. So first one, Krodh. So Krodh means anger. Second one, Mitrata. Mitrata is friendship. Daya, that means lovable character. And then Veerta, that means brave. So here first the father, he is showing some anger to his son. Second one, Mitrata. So these two boys, they are in a friendship manner. So in the next picture, a grandfather, he is showing some love towards his grandson. Fourth picture, a military soldier, he is showing his braveness to a thief. So that is only here you can see different types of characters of this race, things or a person. So in these four pictures, you can understand that what is Bhavvachak Sanya. Next is Samuhavachak Sanya. Samuhavachak Sanya is nothing but a collective noun. जिस संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. इफ दे आर टेलिंग समथिंग इन ए कलेक्टिव मैनर दैट इज ओनली समूहवाचक संज्ञा. वन मोर टाइम आई विल रीड द डेफिनेशन. जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे व्यक्तियों के समूह. सो नेम ऑफ द पर्सन्स, दैट मीन्स collective names of a person, that is kaksha, classroom, sena, soldiers, samuh, category, sand, broad, tukadi, pieces, giroha or dal. So giroha or dal means already I told you that flock. And then vastuon ke samuh, kuj, dher, gathar, guच्छा. So that is a bunch. So examples of वस्तुओं के समूह is कुंज, ढेर, गट्ठक, गट्ठर, गुच्छा. That is bunch of grapes. That is a flock of goat. So this is the examples of Samuhavachak Sanya. So already I told you that Samuhavachak Sanya is nothing but if they are telling something in a collective manner, that is only Samuhavachak Sanya. Next one is द्रव्यवाचक संज्ञा, that is material noun. जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. So already I told you if they are telling about any material or a substance, that is only द्रव्यवाचक संज्ञा. So one more time I will read the definition. जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल गेहूँ भोजन की सामग्री है. सो गेहूँ मीन्स वीट. सो दिस इज द मटेरियल यूज्ड फॉर कुकिंग, दैट इज फूड. चावल भोजन की सामग्री है. सो चावल दैट इज ऑल्सो अ राइस. सो दैट इज ऑल्सो अ थिंग विच इज यूजफुल फॉर फूड. नेक्स्ट घी भोजन की सामग्री. सो भोजन की सामग्री. सो दिस इज अ घी. घी इज ऑल्सो यूज फॉर फूड, दैट इज ऑल्सो अ ईटेबल मटीरियल. एंड देन सोना आभूषण के लिए एक द्रव्य या पदार्थ है. सोना. सो सोना इज गोल्ड. सो दिस इज अ important material. This is a costly material. Next is chandi. Chandi is also a silver. This is also a costly material. तांबा एक धातु है. ऊन. ऊन वस्त्र बनाने की एक चीज है. So ऊन. ऊन is an ullan. Ullan is used for making a clothes. So these are the examples of द्रव्यवाचक संज्ञा. One more time I will repeat. जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल गेहूँ वीट, चावल राइस, घी, सोना चांदी, तांबा ऊन. So sona that is gold, chandi silver, tamba that is sand, oon that is woolen. So these are the examples of द्रव्यवाचक संज्ञा. Next, now द्रव्यवाचक संज्ञा
it has having one more name, that is Padarthvachak Sanya. So Padarthvachak Sanya and Dravyavachak Sanya, these both are same. इस प्रकार के संज्ञा में किसी भी पदार्थ के बारे में बताया जाता है. So this type of noun is told about any substance or material. So as I told you, Dravyavachak Sanya and Padarthvachak Sanya, these both are same only. So for your knowledge, for your known, I am telling this. So उदाहरण सोना, हीरा, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर आदि. So gold, diamond, silver, soil, wood, stone, etc. So these are the examples of पदार्थवाचक संज्ञा, that is material noun. First one, सोना एक कीमती धातु है. Gold is a expensive metal. So second one, पत्थर बहुत ही मजबूत है. The stone is very strong. Third one, लकड़ी बहुत ही उपयोगी वस्तु है. Wood is a very useful item. So here you can see the clear examples of material noun. इस प्रकार के संज्ञा में किसी भी पदार्थ के बारे में बताया जाता है. So in this type of noun, if they are telling about a substance or material, that is only material noun. So here again you see examples: Sona, gold; Hira, silver; हीरा डायमंड; चांदी silver; मिट्टी soil; लकड़ी wood; पत्थर stone. So these are the examples of material noun. Now the next one is सोना एक कीमती धातु है. Gold is a expensive metal. Second one, पत्थर बहुत ही मजबूत है. The stone is very strong. Third one, लकड़ी बहुत ही उपयोगी वस्तु है. Wood is a very useful item. So I hope you have understood what is Dravyavachak Sanya and Padarthvachak Sanya. So children, please don't confuse these both Sanya, because these two are same. Whether we can say as Dravyavachak Sanya or whether we can say as Padarthvachak Sanya, these both are same only. So now you have understood. I hope you have understood Dravyavachak Sanya. Next, you are going to see some examples of material noun. So children, here you can see some pictures of material noun. So first one is, you can see, that is wheat. Second one, that is sugar. And then the next one is a glass of water. And then one more is the glass of milk. So as I told you, the material noun is nothing but which is describing a material or substance, that is only material noun. So here you can see the example, that is wheat, and then sugar, and then a glass of water, and then a glass of milk. So these are the examples of Dravyavachak Sanya. I hope you have understood what is noun, what is types of noun, and what are the explanations for that. Okay children, now we can move to your classwork writing, that you have to write your this video, that is noun video classwork now. So please all of you take your classwork and then sit in a comfortable place and write your classwork very neatly as I explain you. So when you are writing your classwork, when you are writing in English, please write in a cursive handwriting. And when you are writing in Hindi, please write very neatly. When you are writing your classwork very neatly, then only you can understand everything while you are learning for your exam. So take your classwork and sit properly and start writing your classwork. We can go inside our classwork now. Now the first question is, संज्ञा किसे कहते हैं? What do you mean by noun? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. So what is संज्ञा? What is noun? किसी व्यक्ति, any person, वस्तु, things, स्थान, place अथवा भाव. So भाव means character. If any sentence it is telling about a particular person or a thing or a place or a character,
that we will be telling as noun. So again one more time I will repeat the first question. संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. One more time. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. सेकेंड क्वेश्चन. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ लिखिए. जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे दिल्ली, गीता, रामायण. सो वन मोर टाइम आई विल रिपीट. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर नाउन? गिव सम एग्जाम्पल्स. जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ लिखिए. जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, गीता, रामायण. सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्यक्तिवाचक संज्ञा? दिल्ली, गीता, रामायण. सो व्यक्तिवाचक संज्ञा you have understood. I hope you are writing your classwork. थर्ड क्वेश्चन इज जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए. सो व्हाट इज योर थर्ड क्वेश्चन? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए. सो व्हाट डू यू मीन बाय जातिवाचक संज्ञा? गिव सम एग्जाम्पल. जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. So if they are telling about any category, that is only जातिवाचक संज्ञा. One more time I will repeat. जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए. जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे फूल, घोड़ा, नदी. So the examples of जातिवाचक संज्ञा is flower, horse and then river. So this is the third question about जातिवाचक संज्ञा. Next is your fourth question, that is भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए. What do you mean by भाववाचक संज्ञा? Give some examples. जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. So भाववाचक संज्ञा is nothing but if they are telling about a character, that is only भाववाचक संज्ञा. So जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. One more time I will repeat. जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे बचपन, चाइल्डहुड, जवानी एंड देन बुढ़ापा. सो बचपन इज चाइल्डहुड, जवानी मीन्स यंगस्टर, बुढ़ापा मीन्स द ओल्ड एज. सो दीज थ्री आर द कैरेक्टर्स दे आर टेलिंग फॉर भाववाचक संज्ञा. अगेन वन टाइम आई विल रिपीट. भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए. जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बचपन, जवानी, बुढ़ापा एट्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ क्वेश्चन. समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए. व्हाट डू यू मीन बाय समूहवाचक संज्ञा? गिव सम एग्जाम्पल. जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. So if they are telling something in a collective manner, that is only collective noun, that is समूहवाचक संज्ञा. जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल गुच्छा, that is bunch. सेना, that is a crowd of soldiers. कक्षा, that is classroom.
So these are the examples of समूहवाचक संज्ञा. Again one more time I will repeat. समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए. जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. For example, गुच्छा, सेना, कक्षा. Next, you are going to see the sixth question, that means the last question. द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? What do you mean by material noun? Give some example. जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. So in which noun they are telling about a material or a substance, that is only द्रव्यवाचक संज्ञा, that is material noun. Again I will repeat. द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए. What do you mean by material noun? Give some example. जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो. In which noun they are describing about a material or a substance, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. That we will be telling as material noun. For example, जैसे सोना, चांदी. सोना means gold, चांदी means silver. So सोना, चांदी, gold and silver are the examples of this द्रव्यवाचक संज्ञा. One more time. द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए. जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे सोना, चांदी. Children, till this you have seen your classwork for your noun. So I hope you are all copying your classwork very neatly. As I told you, if you are writing in English, please use cursive handwriting, and when you are writing in Hindi, your all the question answers please write neatly. And whether you are writing your classwork, if you are completing it, so that is your duty to read your classwork 2 or 3 times, so that only you can understand what you have written in your classwork. Writing your classwork is not enough, children. You have to follow your classworks, then and there, then only you can achieve in your exams. So already I told you that watch this video very clearly, sit and write your classworks neatly. And one more important thing, beginning of this video I told you that coronavirus is spreading more, so please be careful. Don't go outside, wear mask, use hand sanitizer, and the main thing, the important thing, you have to eat foods which are having more immunity power. I hope what are the advice I have given you that you will follow. So धन्यवाद बच्चों.